So now today's topic is about three-state buffer. Okay, three-state buffer in digital electronic, three-state, tri-state, or three-state means you can say tri-state, right? This in this say in digital electronic we can say that three-state buffer like tri-state, or you can say it is you can say or okay, submit. Three-state. Okay, so in digital electronic you can say this three-state buffer, tri-state or three-state logic allows an output port to assume a high impedance state in addition to 0 and 1 logic level, effectively removing the output from the circuit. This allows multiple circuits to share the same output line or lines. For the symbol of truth table, like you get the symbol like in truth table, in is the data, and then you will get en, that is control input, control input, and en, that is a in it's a data input, and en, that is a control input. Okay, for en is equal to 0. Okay, regardless of the value of in denoted by x, the in is denoted by x. Okay, and the output value is, and the output value is sorry z. Okay, and this en is 0 is denoted by x, then in value is denoted by, for the symbol of in, there is a data input and en is a control input, right? This is the data input and en is a control input. Okay, this in is a data and en is a control input. So for en is equal to 0 regardless of value on en denoted by the x. The okay, and the output value is high z. For en, if 1, for en is equal to 1, the output value follows the input value. So the output value output value follows the input value. Okay, if it is 1, then it's follow the input value, and if it's 0, it denoted by the x. Okay, the output will be hi. So data input in can be invert. So here data input can be invert, and control input data input, that means what? In, that is in. Okay, can be inverted. Okay, and control input that is the en, you know very well, input only input that is the in, and control input that is the en can be inverted. It can be inverted. Okay,
and by addition of bubbles of single. Okay, so here I see here I have downloaded these logiciums which we have already seen, right? But first, this diagram देखने से पहले we will study about transient buffer, tri-state buffer. Sorry. So here, just 1 minute. Tri-state buffer. This is a gate. Tri-state या three-state gate. क्या होता है पहले हमें वो पता होना चाहिए, राइट? ट्राई-स्टेट गेट ये एक डिजिटल सिस्टम सर्किट होता है, लेकिन इनमें 3 स्टेट होती है और जो 2 स्टेट होती है उनको हम बोलते हैं 0 और 1, क्योंकि बाइनरी इनफॉर्म होती है। ओके, जो थर्ड स्टेट होती है वो है हाई इम्पीडेंस, दैट इज एच आई। The third state, that is the output. हमने 2 स्टेट देखी, right? In and en, and high जो third state है that is the high impedance, that is hi, right? So जो आपका सर्किट है वो एक हाई ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका आउटपुट है उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है और डायरेक्ट डिस्कनेक्ट हो चुका है। अगर वो हाई है उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं तो डिस्कनेक्ट हो चुका है। इसके यूज क्या होता है? ये 3 स्टेट गेट या ट्राई स्टेट गेट ये परफॉर्म करता है एंड और नैंड गेट की तरह। ये 3 स्टेट ट्राई स्टेट बफर हम देख रहे हैं ना, ये गेट ये परफॉर्म एंड और नैंड गेट की तरह करता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट एंड नैंड और गेट्स, राइट? सो जैसे कि बफर गेट यूज होते हैं। अगर हम ग्राफिकल सिंबल की बात करें तो इसका ग्राफिकल सिंबल, अभी इसका ग्राफिकल सिंबल कैसा होता है वी विल सी। ओके, सो इस दैट्स व्हाई आई हैव डाउनलोडेड दिस logician here. Okay, let's open this. It will take time. This application requires some time. Let's see some things. Just 1 minute. From here you have to download. Otherwise, I will send. I have sent it the link, right? And so आप उस link में भी you can check it. Okay. Just 1 minute. Let's see. It will take the time. I have show you this diagram through the here how it will design, right? The symbol of this tri-state. Just 1 minute. For this purpose we require the triangle. Okay, वही लॉगिसियम में हम लोग देखते हैं। ओके, जो ये ट्रायंगल है ना, यही ट्रायंगल ही हम लोग और नॉट गेट जो हम लोगों ने जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट टू एंड लेक्चर अटेंड किया है दे विल अंडरस्टैंड कि हमने कैसे ड्रॉ किया, राइट? सो वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने को हम प्रॉब्लम से, दैट्स व्हाई we can't download here directly because I didn't use the link which I have, so that's why it's getting the problem. But I have sent you the link, you just go and check out. Okay, so here this symbol. Okay, like this. Let me draw the first diagram of this. Okay, then we will work. Again I copy here and paste it. Okay, so कुछ इस टाइप का आपका सिंबल है ट्राई स्टेट का. ओके, यू कैन सी दिस ट्राई स्टेट 3 स्टेट है. ओके, सो this is the symbol. Okay, this is the symbol. This is which we have studied that gene state होती है, right? That is in. Then that en, and finally
सो यही डायग्राम आपको अपने लॉगिस्म में निकालना है। ओके, आउटपुट जो आउटपुट। ओके, सो कुछ ऐसा डायग्राम होगा जिसका हमें वर्क करना। ओके, ओके, सो इसका टेबल देखते हैं हम लोग ट्रांसलेट का। ओके, टेबल ओके, सो यहाँ पे हमने ट्रांसलेट में देखा था दैट इज en, then in input, final input, and if high impedance, that is output, right? So en is denoted by 0, high in is denoted by x जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, और high input is denoted by hi z, right? सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कहा ये नैंड और एंड गेट की तरह परफॉर्म करता है। सो सपोज हमने यहाँ पे हम लोग एंड गेट यूज करेंगे या नैंड। सो यहाँ पे अगर एंड यूज करेंगे दैट इज वो एंड और यू नो वेरी वेल एंड और, राइट? सो हम यहाँ पे इनकी एडिशन करेंगे। सपोज 1 + 0 दैट इज 1, राइट? देन 1 1 1 + 1 दैट इज 1। ओके, सो ये आपका ट्रांजिस्टर बफर का जस्ट पॉइंट है जो हमने यहाँ पे कवर किया। ओके, दिस सिंबल एंड दिस इज द टेबल ऑफ योर ट्राई-स्टेट बफर या 3-स्टेट buffer. Okay, so after this we're going to see half adder and full adder. Okay, half adder and full adder. Okay, so let's see the half adder and full adder. What is the half adder? Half adder is a combination arithmetic circuit that adds two number and produce some bit, and some bit you can say as and carry bit output. Okay, so half adder is used when you half adder is basic building block of any digital electronic device. Okay, you can use them to make your own you can say your own location, yeah, locator, own diagram, other your own circuits. Other circuits make arithmetic and logic circuits called ALU to compute the binary addition operation on this of data. Adder are different types starting from half adder and full adder. Let's understand the half adder. The particular adder is there in having two types, half and full. So let's understand the adder is means to join to make the circuit. That's the work of adder is to make the circuit. It's having two types like half and full. So half adder circuit is used when you want to add one bit of number. जब आपको one bit का number add करना है, then you require half adder. We all know by now one bit takes two values, that is 0 or 1. Let us refer the classic truth table. Okay, so classic truth table we will refer here. For this we require the what? Table. Okay. Okay. That means we will take. So first we give the name A, then B. Okay. Sum and carry. Okay. A, B and sum and carry. We don't require this one. So we delete this. Okay. Now A. Here sum indicates the value of operated. This sum is indicate the value of operated upon additional, and carry indicate whenever there has been carry
or not by adding two numbers. Okay, so first let's put the 0 or truth table 0 0 1 1. Okay, so we don't want this one. Just 1 minute. So what I said here, that okay, okay, so 0 1 0 1 0 1. Okay, so here sum indicates the sum. This, you know very well the value of a and b, right? 0 and 1 we taken from the truth table. Okay, so here sum indicates the value operator upon additional, and carry indicate the whether there has been carry or not by adding two values. Let मतलब हम लोग उसको हमें क्या करना है? 0 plus 0, of course 0, right? 0 plus 0, it will be 0. Okay, then carry also 0. We have studied this also in my previous lecture. If you have studied if you have seen this all lectures video, then you will get how we can add and how we can give to carry, right? So it's very easy, that is in half adder. So 0 plus 1, sorry, 0 0 1, that is 1. Okay, and 1 plus 1, that is carry 0. Then again here 1 plus 1, 1 plus, sorry, 1 plus 0, that is 0, and carry will be 0. Okay, then 1 plus 1, of course 1, carry will be 1. Okay, so नथिंग, हम लोगों ने इनकी एडिशन की, जो आया उसको फिर इन तीनों के एडिशन करके हम लोगों ने यहाँ पे कैरी दिया. ओके, जैसे हम लोगों ने स्टडी किया था इन माय प्रीवियस लेक्चर. ओके, so sum indicates XOR gate. Okay, sum indicates the XOR gate. So you know very well how XOR gate, NOR gate, AND gate, right? And carry indicate the NOR gate. Means अगर आपको ये confusion हो रहा है कि how we find this directly carry, then you can understand that sum indicates the XOR gate. Means 0 XOR means, you know very well, addition, right? XOR gate, sum indicate XOR and carry indicates the what? AND gate. So XOR gate symbols, you know very well, I have show you in previous lecture. XOR, NOR, even मैं logarithm की आपको सब कुछ बताई one by one, right? So no need to again show you XOR means what, AND means what, right? But I said that sum indicate the XOR gate and carry indicate the AND gate. So इस table को easily समझने के लिए sum, first of all we don't give anything in sum. Means यहाँ पे suppose just copy this table. Okay, suppose we don't have the value of sum. If you don't understand this value, okay, 1 minute. Suppose अगर आपको ये समझा ही नहीं कि हमने ये कैसे लाया, then we can see. Okay, sum कैसा है and carry कैसा है. अगर okay, then you will get better. Just understand that key sum indicate करता है XOR gate, and carry indicate the what, AND gate. So here if we put 0 plus 0, that is 0, then 0 plus 1, you know 1, then 1 plus 0, that is, we have studied about XOR, right? Not OR. So here it will be convert what, it will convert 0. Why, I will tell you. And 1 plus 1 plus 1 will 1. Why? XOR में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो 0 होता है वो 0 रहता है. ओके, और जो 0 1 होगा वहां पे 1 आएगा, लेकिन अगर 1 0 आता है तो वो कन्वर्ट होता है 0 में, XOR में. ओके, और 1 1 में, keep in mind XOR में 0 0 always 0, 1 0 always 0, और remaining value will be 1. Okay, XOR we are not study about all. अगर all होता तो हम इनके addition करते. okay,
अब सम में क्या होता है, सम इज इंडिकेट एंड गेट, मीन्स 0 plus 0. We have to work with A and B, not this sum. Okay, but we know that sum indicate क्या XOR. XOR में 0 0 always be 0, 1 0 always be 0. Okay, or remaining value will be 1 in XOR. And now we will going to see carry. Carry indicate and. Okay, remember, keep in mind, carry indicate and. So and we know very well, and means multiplication. So 0 into 0, of course 0. Then 0 into 1, it will be 0, right? And 1 into 0 will be 0, and 1 into 1 1. You know very well my and not get कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको पता ही सभी को, राइट? देन सो ये था हमारा हाफ एडर. आई होप कि आपको इसका सिंबल भी पता है कि एक्सओर मीन्स व्हाट, एंड मीन्स व्हाट. डोंट मीन्स डोंट कंफ्यूज एक्सओर एंड और. इफ अगर और होता तो सब में वो एडिशन होता, लेकिन ये एक्सओर है. एक्सओर में सम इंडिकेट, लेट्स सी हियर, just 1 minute. XOR, okay, this indicate the XOR type, and this one and means only always multiplication. Okay, और XOR में always 1 0 ये 0 होता है, और 0 0 ये 0 होता है, और रिमेनिंग जो भी वैल्यू होगी 1 0 1 1 ये ऑलवेज भी 1. ओके, सो आई होप कि आपको इतना इजीली समझ गया होगा. नाउ फुल एडर. फुल एडर, सो एडर के two types है, half and full. Adder is nothing but this type of circuit. Okay, so full adder, it has 3 inputs. This in full adder, it has the 3 inputs. Okay, it has 3 inputs like 3x y and carry in. Okay, 3x y and carry in, that is you can say C in. Okay, carry in, that is C in. So ये तीनों बीट्स का ऐड करते हैं एंड आउटपुट में जनरेट करते हैं सम एंड कैरी. सो 3xy c in s का इसका ब्लॉक डायग्राम होगा. लेट मी शो यू. आई डोंट हैव दिस सॉफ्टवेयर जिससे हम लोग ब्लॉक डायग्राम निकालते थे, लेकिन वी विल यूज दिस वन. ओके, फुल एडर. ओके, सो फुल एडर में ओके, सो x this is the x, then y, and finally xy, and finally xy, finally c in, right? This arrow indicate c in. Okay, so x, y, and c
Okay, C in. So this indicates the X, Y. Okay, this side is indicate. Just 1 minute. We are watching this side. This side indicate input, right? And this one, that is S, right? This is the S, and this is a diagram of C out. Okay, C out. Okay, C in, C out. Okay, so you can say that this is the output. Output. This side is the input, X, Y in, and this side is output, C out and C in. Okay, so let's see the through table this diagram. Okay, I don't know how much will we require, just I'm giving all. Okay, so first we require the A. Let me see, A, then B, C, C in, that is three part is the input. Then we require sum, then carry. Carry out means C out, right? Carry out and carry in, we know. Okay, so this much is enough for us, right? So now just 1 minute. Okay, now A, suppose 0, sorry, now A side is 4 times 0, and we require here more field we require, right? So we have to insert one more we require. So let me insert the row below. I think so. One more we require here maybe. So 1, 1. So again we require here, right? Insert row. So this is जो हम लोग डायग्राम देखे उसका ये टेबल है, right? Right? Then see here, अपनी रो below जाती गई है. See here, 0, 1, 4 time 1, right? We don't want see. Okay, 0. We require 4 time 1, right? So we don't want this. So we cut it. Okay, leave. Then double 0, double 0, double 1, right? Again double 0, again double 1. You know very well this, right? फिर यहाँ पे C in, this is input 0, 1, 0, 1, 0, 1, then 0, finally 1. You know this, right? Now sum. Sum is always we have to do what? Triple times 0.
द फुल एडर बाइनरी एडिशन करता है। ओके, फुल एडर ये क्या करता है, बाइनरी एडिशन करता है। तो हम तीनों को ऐड करना है। ओके, जो मैंने आपको पहले के टेबल में भी समझाया था एंड व्हाट मैंने एग्जाम में भी आपको समझाया था कि दैट इज पहले के प्रीवियस लेक्चर में भी, दैट इज 0 + 0 = 0। देन कैरी भी क्या होगा, 0 होगा, राइट। देन 0 + 0 + 1, that is sum is 1। okay, and carry 0, it is 0, then 0। okay, then 0 + 1 is 0 + 1 is 1, and plus 0 is 1, right? 1 minute, let me 0 1 1। then you have to do by yourself, 3 times addition करनी है और carry देनी है। ओके, सो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है एंड अभी भी मैंने आपको इसका फॉर्मूला समझाने से पहले ही समझाया है, राइट। सो यू डू बाय yourself, you have to study, means how to find, right? so here 0 1 1, then 0 1, right? 0 here need to be 1, then again 0 and 1। okay, so do carry how to do, right? you know very well, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये स्टडी किया था कि कैसे इसका कैरी निकालते, राइट। 0 1 1, so calculate by yourself and do it। okay, so 0 1, so 1 is a 1, that is silly sir, full adder binary addition करता है। okay, so 0 + 0 + 0, 0 + 0 + 1 is 1, right? then 0 + 1 is 1, or 1 + 0 is 1। so 0 + 1 is 1, 1 + 1 is 0, carry 1। मतलब देखो ट्रिपल टाइम 0 होगा, 0 + 0, ट्रिपल टाइम 0 ऑलवेज 0 आता है। ओके, और 0 + 0 + 1 होगा तो वो 1 होगा, और 0 + 1 होगा, अगर जहां भी 0 + 1 होगा तो इस 1, और +0 is 1, 0 + 1 is 1, 1 + 1 is 0, 1 + 1 अगर 1 + 1 0 और कैरी 1 आता है, 1 + 0 is 1, 1 + 0 is 1, 1 + 0 is 1, 1 + 1 0, मतलब जहां 1 + 1 हुआ 0 आया तो वहां पे कैरी क्या होगा, 1 आएगा। ओके, आई शो यू ऑल्सो, राइट। 1 + 1 is 0 and 1 is carry, 1 is 0, 1 is carry, 0 + 1 is 1, 1 is sum and 1 is carry। ओके, सो इस टाइप का कुछ आपका ये होगा। प्रीवियस लेक्चर गो एंड चेक, तो आपको समझेगा कि एडिशन, बस जस्ट हमें इन तीनों की एडिशन करनी है रो वाइज। ओके, एंड वी हैव टू गिव कैरी आउट एंड सम। ओके, एडिशन करके जो वैल्यू आएंगी और किसको कैरी जाता है जिसको, सो यहाँ पे इन तीनों का 0 + 1 जो मैंने आपको समझाया, देखो 0 + 1 क्या होता है, राइट। 0 + 1 is 1, right? 0 + 1 is 1, then so कैसे कैरी देना है, क्या देना है, डू बाय योरसेल्फ, मींस जस्ट गो एंड चेक द प्रीवियस पीरियड। और ये आपको आई थिंक सो 12 में भी हुआ है कि हम लोग कैसे बाइनरी नंबर को एडिशन करते हैं, राइट, और कैसे हम कैरी आउट कैरी इन करता है। नो, दिस इज नॉट न्यू फॉर यू, राइट, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। then also I have explained you this all, right? So we have studied about carry out. Then flip flop is there. In flip flop is a nothing but is a basic memory element. So you have the some, just 1 minute, flip flop. Okay, so it's nothing but is a basic element। SR flip flop has 2 input। in flip flop में SR है जिसमें 2 inputs and 2 outputs होते हैं, right? so it has 2 output although, okay, and through in 2 input, the 2 input represents set storing। जो 2 inputs होते हैं, input, this is represent the storing of one flip flop, and this set is represented to set, here set is represent set is represent 1 in flip flop। okay, 1 in flip flop। okay, set is represent 1 in flip, set is represent 1 in flip flop। okay,
flip flop. And then one is represent set in flip flop, and one is represent one sorry, and then reset is storing the, means the, here one is represent the one in flip flop, that is a storing the storing a flip flop, and reset is storing a zero in flip flop. ओके मतलब जो सेट है ये क्या स्टोर करता है वन, और जीरो क्या सेट करता है, रिसेट, सॉरी रिसेट ये जीरो स्टोर करता है, और सेट ये रिसेट ये जीरो स्टोर करता है, zero storing the zero. Okay, storing zero, storing. Okay, and set is storing the one. Okay, that is the present in this, it is a flip flop. Okay, so it has two output q, and the place a new value in flip flop sent a current over either s or r depending on the value we want to get, the value just examine. Okay, and so okay, today's lecture is over here. Thank you. Okay.